Arun took a loan of 1400 with a simple interest for as many years as the rate of interest. क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब क्या है? Arun took a loan of 1400 with simple interest for as many years as the rate of interest. What do you mean by this? That the time period and rate of interest are equal. He took a loan of 1400 for as many years as the rate of interest. मान लीजिए rate of interest अगर 2% था, that means he took a loan for 2 years. अगर rate of interest 3% था, he took a loan for 3 years. अगर rate of interest 5% था, he took a loan for 5 years. अच्छा, 2 बार 7 है. कितना आ रहा है? 7%. I equals to PRT upon 100. Right? He is paying how much interest? 686 rupees. Principal is 1400. Okay? We have to find the rate of interest. Time period is equals to rate of interest. So into R. हम T को किससे replace करेंगे? R से. Upon 100. So 100 will cancel with 14. This will cancel out 456 times. Right? 9 times. So R square is 49. So value of R will be 7%. ठीक है. A person borrows rupees 6,000. A person borrows rupees 3,000 for 2 years at 5% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6 full 1 by 4%. 6 full 1 by 4%. That means it is 6.25%. So he immediately lends it to another person at a rate of 6.25% for 2 years. Find his gain in the transaction per year. मान लीजिए मैंने 1000 रुपए किसी से लोन लिया. Right, I have taken loan of 1000 rupees at 10% per annum rate एक साल के लिए. ठीक है. So on 1000 rupees at 10% per year, how much interest I am going to pay? ₹100. I'll pay 100 rupees interest. Now मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपीज 10% के रेट से एक साल के लिए लोन लिया और मैंने वही 1000 रुपीज आपको एक साल के लिए लोन दे दिया 10% के रेट पे, तो आप मुझे कितना इंटरेस्ट देंगे? कितना? हाँ, एक ही साल के लिए. कितना? उतना ही. कितना वैल्यू बोलो? 1000 रुपीज मैंने आपको 10% पर ईयर के रेट से एक साल के लिए लोन दिया, 100 रुपीज देंगे. ठीक. तो मान लीजिए मैंने 10% के रेट पे लोन लिया और मैंने अगर 10% के रेट पे आपको लोन दे दिया, विल आई मेक एनी प्रॉफिट? नहीं. प्रॉफिट कब बनाऊंगा? जब मेरा परसेंटेज ज्यादा हो आपसे. मान लीजिए आई हैव बोरोड 1000 रुपीज एट 10% पर एनम. So in 1 year, how much interest I am going to pay to you? 100 rupees. Now let's say I give you the same loan of 1000 rupees at 15% per annum rate. So in 1 year, how much interest you will pay me? 150 rupees. So now you are going to pay me 150 rupees interest and I am going to pay 100 rupees interest. तो ये 50 rupees जो बचे ये मेरा क्या हुआ? Profit हुआ. Right? So if the person is going to make any profit, he is going to make this profit because of this extra rate, because see, he is taking a loan at 5% rate, but he is giving a loan at 6.25% rate. So he is giving a loan at 1.25% rate extra. हाँ या ना? So because his loan rate is 1.25% extra, that's why he is going to make some profit. Total amount he is borrowing is 3000. So on 3000 rupees, right, at 1.25% rate in 1 year. अब आप बोलेंगे कि नहीं सर वो तो लोन 2 साल के लिए ले रहा है, तो आप 1 ईयर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 1 ईयर के लिए हमें कैलकुलेट करना है. अगर यहाँ पे आप 2 वैल्यू रखेंगे तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पर ईयर का गेन पूछा है. 2 साल में मान लो अगर उसे 100 रुपीज का गेन होगा तो पर ईयर कितना गेन हुआ? 50 रुपीज. राइट. तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, डिवाइड बाय 100. हाउ मच इंटरेस्ट
ही विल गेन, ये पता करना था। कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 3, 37. क्लियर, लाइक दिस। अब ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। My question says a sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 400 rupees more. Find the sum. ठीक है, so we are putting a sum at simple interest at a certain rate for 2 years. Now, had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 400 rupees more. मान लीजिए आप और मैं एक बैंक में अकाउंट खोलते, ठीक है, आप अपना अकाउंट खोलते हैं, मैं अपना अकाउंट खोलता हूं। आपने 1000 रुपीज उसमें डिपॉजिट किए, मैंने भी 1000 रुपीज डिपॉजिट किए, ठीक है। अब बैंक कहता है कि ठीक है सर, मुझे वो 5% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं कि सर आप हमारे बैंक में पैसा रखिए, हम आपको 5% का इंटरेस्ट रेट देंगे। आपको भी 5% दे रहे हैं, तो क्या दोनों का इंटरेस्ट सेम आएगा एक साल में? आपने 1000 रुपीज रखे हैं, मैंने 1000 रुपीज रखे हैं, मुझे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपको भी 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या एक साल में जो इंटरेस्ट दोनों का जनरेट होगा वो सेम होगा? सेम इंटरेस्ट जनरेट होगा। एग्रीड? ठीक। अब मान लीजिए आपने बैंक को कहा कि नहीं नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए इंटरेस्ट, तो बैंक ने आपसे कहा कि चलो ठीक है, हम आपको 8% का इंटरेस्ट देते हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए 1000 रुपीज पे 5% के रेट से मुझे एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 50 रुपीज। और आपको 8% के रेट पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है? क्यों ज्यादा मिला ये इंटरेस्ट? स्टूडेंट होने की वजह से, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से। क्यों आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिला? और मतलब आपको क्यों ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है? क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। कितना? 3%। तो 3% इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आपको कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिला? 30 रुपए, ठीक। तो अब आपसे कहता है कि a sum was put at simple interest for 2 years at a certain rate. Had it been put at 2% higher, it would have fetched 400 rupees more. Right? I am simply saying कि if you open a bank account and I open a bank account and we both put 1000 rupees at 5% rate, then in 1 year how much interest you are going to get for 1000 rupees at 5% rate? 50 rupees. On the same 1000 rupees at 5% rate in 1 year, how much interest I am going to get? 50 rupees. So when we put the same amount at the same rate for the same time, both of us get the same rate of interest, correct? And now let's say you have negotiated with the bank. You said कि नहीं sir, हम तो student है, हमें ज़्यादा rate of interest मिलना चाहिए. And now the bank said, all right, I'll give you 8% interest rate. Now I am putting 1000 rupees for 1 year at 5% rate, so I am getting 50 rupees interest. But now you are putting 1000 rupees for the same time 1 year, but at 8% rate. So how much interest you are getting? 80 rupees. Now you are getting 30 rupees extra interest. Why? Because your rate of interest was 3% higher than mine. So any extra interest that I am going to get will be because of this extra rate of interest, right? If I am putting, let's say, P rupees at R% rate for 2 years, then this much interest I am going to get. Yes or no? If I am putting P rupees principal at R% rate for 2 years, this much interest I am going to get, PRT upon 100, right? But now, for the same amount of time, for the same amount of rupees, I am getting 400 rupees extra interest. क्यों? ऐसा क्या हो गया कि 400 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा है। तो एक बात बताओ, ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया, ये इस 2% की वजह से ही आया ना? अगर ये 2% नहीं होता तो क्या ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आता? तो बस सिंपल सी बात है कि P रुपीज प्रिंसिपल पर 2% के एक्स्ट्रा रेट से 2 इयर्स में जनरेट होने वाला इंटरेस्ट कितना है? प्रिंसिपल मिल जाएगा। कितना आ गया? प्रिंसिपल कितना आ गया?
सर अगर टाइम पीरियड सेम है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है, तो अगर कोई इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो वो क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रिंसिपल। बात समझ में आई? टेल मी दिस। ऋषा डाउट क्लियर हो गया? 8 4500. See, we are getting how much in extra interest? 450. Why? Because our rate of interest is 2% higher than the earlier one. So at 2% extra rate on P rupees principal in 5 years of time, how much extra interest we are getting? 450. So यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी कितना? 450 into 10, 45. Fine. हाँ जी, Nikhil borrowed some money at a rate of interest 5% per annum for 2 years, first 2 years, 8% for next 5 years and 10% per annum for a period beyond 7 years. If he pays total interest of 8,000 at the end of 10 years, then find the money Nikhil borrowed. See, Nikhil borrowed some money. Let's say Nikhil borrowed P rupees money, right, for a total time period of 10 years, right? Then in that case, he pays 5% per annum interest rate for the first 2 years. So let's say on P rupees principal, in the first 2 years, his rate of interest will be 5%. So on P rupees principal, in first 2 years at 5% rate, this much interest he is going to pay. High na? Okay. And now for the next 5 years, on the same P rupees principal, he is going to pay the interest at a rate of 8%. So on the same P rupees principal, in the next 5 years at 8% rate, this much interest he is going to pay. High na? PRT upon 100. Yes or no? एंड नाउ ऑन द सेम पी रुपए, अभी देखिए 2 साल और 5 साल, कितने साल हो गए? 7. टोटल कितने साल के लिए लोन लिया है? हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स. आउट ऑफ 10 ही पेड द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 7 इयर्स. रिमेनिंग इयर्स विल बी 3, राइट? सो फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स ऑन द सेम पी रुपीज प्रिंसिपल, he is going to pay the interest at a rate of 10%. This much interest he will pay, and the sum total of all these 3 interests is kitna? Because he is paying a total interest of 8,000, correct? Now I will, this will be become 10p, 40p and 30p. 10 plus 40 plus 30, 80p. So 80p by 100 equals to 8,000. ये कैंसिल हुआ, इस तरफ जाएगा. अच्छा चलिए ये भी कैंसिल कर देते हैं. 1000. तो p विल बी कितना आया? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.